Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the last topic of our chapter number 13, that is exercise. So let's start. So dear students, the last lecture of this chapter, chapter number 13, gaseous exchange, so that is exercise. तो इसमें हम exercise को detail के साथ देखेंगे. So let us start. Question number 1, that is the fill in the blanks. So the first blank is dash is the most abundant protein in the world. तो dear students, ये प्लांट वाला सेक्शन में हमने पढ़ा था रोबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज ये एंजाइम है जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है. चूँकि पूरी दुनिया में ज़्यादा तादाद जो प्लांट्स की है तो ये एंजाइम चूँकि पूरी दुनिया में के प्लांट्स के पास है, सो मोस्ट प्रोबेबली द रोबिस्को इज़ द मोस्ट abundant प्रोटीन इन द वर्ल्ड. So blank number 2, hemoglobin is a complex molecule which contains 9,512 atoms and dash amino acids. तो याद होगा dear students आपको चैप्टर नंबर 2 में हमने इस बात को डिटेल से डिस्कस किया था. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, वहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर ये बात हुई थी कि जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स. हर अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स और हर बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स. So its total makeup of 574 amino acids. In the blank, that is, the hemoglobin is a complex molecule which contains 9,512 atoms and 574 amino acids. Now blank number 3, it says, the opening of larynx is called, जी तो dear students, hopefully आपको याद आ गया होगा, the opening of larynx is called glottis. Blank number 4, it says, when the smaller bronchi attain the diameter of dash millimeters, so that is 1 millimeter, clear, or less, they are called as bronchioles. Blank number 5, the last blank, there are about 12,000 stomata per square centimeter of leaf surface of tobacco plant. Now, question number 2, write whether the statement is true or false. Correct the statement if it is false. Clear? So, statement number 1 is ATP is generated during organismic respiration. So, dear students, it is false statement. ATP organismic respiration में नहीं बनती बल्कि cellular respiration में बनती है. So, the correct statement will be ATP is generated during cellular respiration. Statement number 2, it says water is better respiratory medium than air. तो आपको याद होगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, द फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एयर इज बेटर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्लियर? और यही इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है दैट एयर इज बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर. द थर्ड स्टेटमेंट, द अर्थवर्म डज नॉट पोजेस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन. यस, इट इज ट्रू. सो हमने देखा था कि अर्थवर्म के अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं, वो जनरल सरफेस एरिया से वो गैसियस एक्सचेंज जो है वो करता है फ्रॉम द स्किन. नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट, इन पैराब्रोंकाई ऑफ द बर्ड्स द ब्लड फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो हमने पढ़ा था इसको डिटेल के साथ. नंबर 5, रिंग शेप्ड कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन ट्रेकिया ऑफ मैन. यस, इट इज फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस एंड सर्कल द करेक्ट आंसर. तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं हमारे टेक्स्ट बुक के. सो फर्स्ट MCQ इज एयर स्पेसेस बिटवीन मेसोफिल सेल्स ऑफ अ लीफ comprise dash percent or dash of the total volume. Alpha option is 20%, beta option is 30%, Charlie option is 40% and delta option is 50%. तो होपफुली आपको याद आ गया होगा कि लीफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एयर स्पेसेस होती हैं, तो दैट इज़ 40%. द करेक्ट आंसर इज चार्ली, दैट इज़ 40%. MCQ number 2, it says the respiratory system is most efficient in. तो most efficient respiratory system dear students किस में है? Alpha option is man, beta option is bird, Charlie option is fish, delta option is snake. So the correct answer obviously you have guessed, that is birds. So beta option, birds, that is the correct answer for this MCQ number 2. Now MCQ number 3, it says the respiratory pigment present in the muscles is called. Yes. So muscles के अंदर कौन सी respiratory pigment है?
Alpha option is myoglobin, beta option is globin, Charlie option is hemoglobin, and delta option is hemocyanin. So dear students, the correct answer is alpha option, that is myoglobin. तो मसल से याद रखिएगा, जहां पर भी वर्ड मसल्स आएगा तो उसके साथ मायो आएगा, तो मायो मीन्स मसल्स. नाउ MCQ number 4, it says blood contains dash oxygen per 100 ml of blood when the hemoglobin is 98% saturated. तो आपको याद होगा जब हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेट होती है तो उसमें 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml होती है. जब 98% होती है तो yes, you have guessed. So the alpha option is 19.6 ml, beta option is 18.6 ml, Charlie option is 17.6 ml, and delta option is 16.6 ml. So the correct answer for this MCQ is alpha option, that is 19.6 ml per 100 ml at 98% saturation. Now the last MCQ, how much air can lungs hold when they are fully inflated? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है लंग कैपेसिटीज़ के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था. तो जब एक एडल्ट लंग मुकम्मल तौर पर फुली डीप इंस्पिरेशन पर इन्फ्लेट होता है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? यस, यू हैव गेस्ड. सो लेट अस सी द ऑप्शंस. अल्फा ऑप्शन इज 5 liters, beta option is 4 liters, Charlie option is 4.5 liters, and delta option is 3.5 liters. So the correct answer is 5 liters, alpha option. Now, question number 4, that is short questions. So the first short question is, how does breathing differ from respiration? तो dear students, आपको पता है कि breathing जो होती है ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती है और रेस्पिरेशन जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं ये सेल लेवल पे हो रही होती है. सो ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. द फ्रेश एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन इज पम्प्ड इनटू द लंग्स and air with more carbon dioxide is pumped out of the lungs. It consists of two phases, inspiration and expiration, or inhalation or exhalation. While the cellular respiration is the process by which cell utilizes oxygen, produces carbon dioxide, extracts and conserves the energy from food molecules in biologically useful form such as ATP or adenosine triphosphate. Question number 2, it says, how much carbon dioxide is present in venous and arterial blood? तो आपको याद होगा dear students, venous blood में 54 ml per 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड है और arterial blood में 50 ml per 100 ml of carbon dioxide is there. Question number 3, it says, how does air always remain in the lungs of human beings? तो dear students, आपको पता है कि when concentration of gases in lungs become equal to that of in the outer environment, the exchange stops and further air is retained inside the lungs. Question number 4, it says, what are the products which are produced during photorespiration? तो photorespiration में आपको याद होगा हमने डिटेल से पढ़ा था. तो products are serine and carbon dioxide. दो products बनते हैं इसमें. Now last short question, how much a water medium is denser than air medium for exchange of respiratory gases? So density हमने पढ़ी थी, that is 8,000 times. Water is 8,000 times more dense, 50 times more viscous, but has less amount of the oxygen, that is 10 ml per liter, while the air has got 200 ml per liter. Clear? तो density इसकी ज़्यादा है एयर से, ठीक है, 8,000 टाइम्स. विस्कोसिटी भी इसकी ज़्यादा है 50 टाइम्स. सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे अपने बुक का लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 14, ट्रांसपोर्ट. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.